mass spectrometry. So once the proteins from the crude extracts have been resolved or separated, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहें कि इनको हमने एक्साइज कर लिया है, प्योरीफाई कर लिया है, तो उसके बाद जो अगली टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं वो ये है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, या और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उनको एवेल्युएट कर सकते हैं. तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इट इज़ द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू नो और टू एलुसिडेट द मोलेकुलर वेट ऑफ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंसेस. इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन को ही हम टारगेट कर पाएँ. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं. किसी ओरिजिन से कोई भी जो मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है उसका हम मोलेकुलर वेट जो है वो हम हासिल कर सकते हैं. सो इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल टेक्निक. So once the proteins they are resolved, and then the next step to evaluate them by applying different techniques. A few techniques we are going to discuss here, and one of them it is the mass spectrometry. And the target proteins here they can be fragmented by using enzymes like the trypsin or different type of proteases enzymes can be used to degrade them into smaller peptides, and then they can be further subjected to mass spectrometric analysis. So actually what happens in the technique of mass spectrometry, that the compound under question they are bombarded with or treated with a source of electron or beam of electron, and electrons that are being bombarded on the protein molecule, it will cause its dissociation or fragmentation into daughter ions. And the pattern of ions that are generated from the protein, it can be further, you can say that isolated or analyzed or detected on the basis of mass to charge ratios of the fragments that are produced, so that those ions they will produce a specific spectrum of ions, and spectrum of ions then it can be compared with the known spectrum of the known protein. So in this way, by the ionization of the target proteins, we can know their molecular weight. So mass spectrometry it can be combined with variety of techniques. And here the most important or common technique it is the GC or gas chromatography, mass spectrometry, and commonly it is called as the GCMS. So here the compound in question, like protein, it can be injected into the instrument where it is evaporated as a result of heat, and then it is carried by the gas for the further fragmentation by the beam of electron. After ionization, then the mass analyzer it can detect the pattern of fragmentation on the basis of mass to charge ratio. Another case, another instrument it is being applied, and it may be called as the liquid chromatography mass spectrometry, and it can be abbreviated as LCMS. कि इसमें हम जब सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो कैरियर गैस जो कैरियर है वो गैस नहीं होती बल्कि कोई लिक्विड मोबाइल फेज होती है. तो इसमें डिफरेंट सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोटीन को डिसॉल्व करने के लिए. तो जो मोबाइल फेज है जो कि लिक्विड है वो मॉलिक्यूल को कैरी करती है. अगर वो क्रूड एक्सट्रैक्ट भी है तो वो नेक्स्ट कॉलम में जाके वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलेकुलर वेट, और उसके बाद जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करती है दैट कैन कॉज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल. सो इन दिस वे वी कैन नो द molecular weight by applying this mass spectrometry technique. So it can be used in variety of ways, as I told you that, but we are not going to discuss in detail because it will be out from the scope of this subject. So at this point, it is sufficient to mention here that after protein purification, the mass spectrometric techniques
they can be used for the evaluation of the molecular weight or for the identification of the proteins.